So dear students, welcome back to our today's lecture. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. सो अभी तक हम जो भी रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात कर रहे थे, हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे. तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हमने रिजिड रोटेटर के बारे में देखा, उनका रोटेशनल स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, कैसा एनर्जी लेवल्स आता है. इसके बाद हमने नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में डिस्कस किया, उनका रोटेशनल स्पेक्ट्रम, देयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एज वेल एज द एनर्जी लेवल ऑफ द diatomic molecule. Now moving from diatomic to polyatomic molecule. Now हम देखेंगे कि अगर आपका molecule जो है polyatomic है, then what kind of rotational spectrum we can get for polyatomic molecule, or is there any major difference between your diatomic molecule and polyatomic molecule? So जब हम polyatomic molecules की बात करते हैं, तो ऑलरेडी हमने पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको एक लेक्चर दिया था, जिसमें हमने लिखा था कि जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. जो मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर, द फर्स्ट वन इज योर linear molecules. So polyatomic molecules can be linear. It can be the second category is our symmetric top, and the third category is our asymmetric top type. So based on the movement of inertia in different directions, we can have these three different categories of polyatomic molecules. So now starting from our linear molecule, let's start with the linear molecule. So the first category we are discussing about is our linear polyatomic molecules. So linear polyatomic molecules, how we can classify these linear polyatomic molecules. The best example of this linear polyatomic molecule is our, we have carbon oxy sulfate, that is OCS. So this is the first I can say the linear polyatomic molecule. Besides this, we have another important polyatomic molecule, that is our CO2. But the CO2 is I can say it is inactive, microwave inactive. And if we can undergo isotopic substitution on the CS2, the isotopically substituted molecule is also microwave inactive. So isotopic substituted CO2 is also microwave inactive. So ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइसल्फाइड, because we know that the molecule should possess a dipole moment. तो यहाँ पे इसमें डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो our carbon dioxide is microwave inactive. So now let's take the example of this carbon oxysulfate is the first linear polyatomic molecule. And when we talk about this linear polyatomic molecule, we can I say that we can arrange this molecule like this. We have COS. And based on the movement of inertia in three different directions, let's take this axis is IA, this axis is IB, and this axis is IC. So for a linear polyatomic molecules, we have that IB is equal to IC, IB is equal to IC, and IA is equal to 0. So this is the condition for a linear polyatomic molecule, that the moment of inertia along these two axes is equal, because
during the rotation of this molecule during these two axes, two of these atom, that is oxygen and sulfur, is changing its position. So these both these rotation will lead to the change in the position of this carbon and not carbon, I can say this oxygen and sulfur. If the axis is passing through the carbon, but usually it's not so, then there is only change in the position of these two atoms occurs. So the moment of inertia along these two axes will be equal. But we can see that when we rotate these molecules along axis A, there will be no change in the position of any atom taking place. So the moment of inertia along A, we can say, is negligible. If it is negligible, we can consider the moment of inertia along this axis is zero. So for a linear polyatomic molecule, we have the relation of our moment of inertia, that IB is equal to IC. It means moment of inertia along the direction B and C axis are equal, but the moment of inertia along axis A is zero. Zero means it's almost negligible. So these two is end-to-end over rotation, and this one is about its axis. So when you rotate these molecules about its own axis, the moment of inertia is zero. So for this you must keep in mind this relation, that for a linear polyatomic molecule, IB is equal to IC and IA is equal to zero. Now let's come to the rotational spectrum of a linear polyatomic molecule. Rotational spectrum of a linear molecule. Linear molecule here means linear polyatomic molecule. Okay, now if we see the rotational spectrum of a polyatomic molecule, it's very much similar to our diatomic molecule. Diatomic molecule. So if the rotational spectrum is almost equal to the diatomic molecule, then the energy level is also equal. So energy levels of a polyatomic linear molecules will also similar to what we have for the diatomic molecule, that is EJ is equal to, we have equation BJ into J plus 1 minus DJ square J plus 1 whole square centimeter inverse. So the energy equation for both diatomic as well as polyatomic linear molecule is similar. So this equation you must keep in your mind, that this is a very important equation, that the energy level for a, I can say, rigid rotator as well, diatomic molecule as well as linear polyatomic molecule is very similar, and EJ is equal to BJ into J plus 1 minus BJ square plus into J plus 1 whole square. So the energy level is, if the energy level is very much similar, then the spectrum will also be little bit almost similar, with little bit I can say little bit modified by this distortion constant. So the selection rule is also similar. Selection rule is also similar, and this is delta J is equal to plus minus 1. Plus minus 1. So then what is the major difference between a diatomic and a polyatomic molecule is, since we see that if you rotate the diatomic molecules through end-to-end rotation, अगर आप molecule को end-to-end rotation कराते हैं तो क्या होगा, आपकी जो movement of inertia है along two axes is much higher as compared to your movement of inertia along the main axis, that is IA. So due to which what difference we get from here is that the B value, the first point is that the B value will be much smaller, and
the spectral lines are more closely spaced. So what will be the difference between the rigid diatomic molecule and the polyatomic molecule is, if it's the spectrum of a normal rigid diatomic molecule, and this is the spectrum of a polyatomic molecule, and this is for diatomic molecule, then if it's the spectrum of a diatomic molecule and the separation between the line is 2b, usually we have 2b, then in case of your polyatomic molecule, due to the lesser value of B, the spectrum lines are much closely spaced. Then the space between the spectrum lines are very less. तो यहाँ पे मेजर जो डिफरेंस है वो आपकी स्पेस में होंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस कितना सेपरेट होंगे. So अगर हम बात करते हैं रिजिड डायटोमिक रोटेटर की बात करते हैं, तो यहाँ आपके जो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो सेपरेशन होते हैं, या वी कैन से द बी वैल्यू ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर अबाउट 10 centimeter inverse. However, this if the in case of the polyatomic molecule, for a triatomic molecule, I can say the value of B is less than 1 centimeter inverse. That's why the spacing between the spectral lines are decreased, or we can say the spectral lines are more closely spaced. So this is the first major difference between our diatomic molecule and a polyatomic molecule. The second case is, we say any polyatomic molecules must have a dipole moment. Dipole moment. Polyatomic molecule must have a dipole moment. Then only it will show you a rotational spectrum. Otherwise, it will not show the rotational spectrum, or as the case of our CO2, this is microwave inactive. Microwave inactive. Therefore, they will not show any, I can say, any major, it will not show a rotational spectrum. Even if you substitute this oxygen with its isotope, then also it will not show any major changes in their bond length, and that's why it will also not show rotational spectrum. The third important point we have to keep in mind is a non-cyclic polyatomic molecule containing n number of atoms has n-1 individual bond length to be determined. अगर आपके पास कोई भी नॉन साइक्लिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हम n नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, तो हर एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमें n-1 नंबर ऑफ बॉन्ड लेंथ हमें डिटरमाइन करने होंगे. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ OCS, अगर आपके पास OCS है, ठीक है, दैट इज कार्बन ऑक्सीसल्फेट, इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 3. One is oxygen, second is carbon, third is sulfur. So the total number of atoms is 3. So the number of bond length to be determined is 3 minus 1, that is 2. So we have to determine two important bond length. Then what are the bond length is, if this is our carbon oxysulfide, then we have to determine two bond length, that is one, the bond length between carbon and oxygen, and the second one is our bond length between carbon and sulfur. So any non-cyclic polyatomic molecule containing any number, that is n number of atoms, we have to determine n-1 number of individual bond length. ठीक है, तो ये आपको ध्यान देखना होगा. इसके साथ साथ, but there is only one moment of inertia and only one value can be determined from the spectrum. So for a linear molecule,
there is, you can say, only one moment of inertia, and only this one value can be determined from the spectrum. ये हमें स्पेक्ट्रम से निकालना होगा. One moment of inertia means we have IB is equal to IC. So both of these are equal. So anyone we can determine from the spectrum, because we know that IA is equal to 0. So these three important points we have to keep in mind while discussing the rotational spectrum of a linear polyatomic molecule. Now let's I can say now let's consider the rotation of this OCS, the carbon oxysulfide, and let's determine the value of determine the equation for the moment of inertia. So let's now consider the rotation of carbon oxysulfide in some details. And let's derive an equation for moment of inertia, that is I. Now we have the molecule that is carbon oxysulfide. So we have a carbon, this is carbon, let's present is by green color. This is our oxygen, and this is our sulfur. So we know that sulfur is have higher atomic mass, so their size will also be larger as compared to the other two. So this is sulfur, this is carbon, and this is oxygen. This is their bond. And let's consider the mass of oxygen is MO, mass of carbon is MC, and mass of sulfur is MS. And if we see the center of gravity, that is center of mass of this molecule, then it will be somewhere here, because we know that sulfur is higher atomic mass as compared to the other two. We can say the center of gravity or the center of mass will shift little bit towards this sulfur. No, so this is our center of mass, or we can say center of gravity. Now let's consider the distance between the center of mass and this carbon is RC, and the center of mass to your oxygen is RO, and from the center of mass to the center of sulfur is your RS. So ये हमने consider किया है. Now then, what would be the relation at the center of mass? So I can say, therefore, at center of mass पे moment of inertia का क्या relation होगा? The moment of inertia will be, I can say, MO RO, that is mass of oxygen and the distance between oxygen to center of mass, plus MC RC will be equal to our MS RS, and then only this center of mass will balance between these three atoms. So we have a relation where MO RO plus MC RC is equal to MS RS, and this is the definition of our center of mass, जहाँ पे दोनों साइड क्या होंगे, मॉलिक्यूल एकदम बराबर होंगे. And we know that the moment of inertia is I. I is equal to usually mr square, that is the mass and the distance from the center of mass to that atom. And the relation is that we can set a relation like this, that the total moment of inertia of this molecule will be equal to MO RO square plus MC RC square, and then we have MS RS square.
So this is the definition of the moment of inertia, that the total moment of inertia of this molecule will be equal to the moment of inertia of each individual atom. ठीक है, तो ये हमारे पास और एक relation आ गया. We can also write RO, that is RO, this distance will be equal to RCO, that is the distance between carbon and oxygen, plus RC. So this distance, that is RO, will be equal to distance between this carbon, oxygen and carbon plus distance from carbon to center of mass. So overall, this will be equal to sum of this plus this. So this is the one equation. And another I can write it is RS, that is the distance between the center of mass to the sulfur. I can write it is RCS, that is the distance from this sulfur to this carbon, minus RC, If I reduce the distance from the center of mass to carbon from this, the distance from carbon to sulfur, I will get this RS value. So let's consider this is equation number 3, where our RCO, I can write here, is where RCO and RCS are the bond length of the molecule. Bond length of the molecule. It means RCO means distance from oxygen to carbon and distance from carbon to sulfur. That will be the total bond length of the molecule. So this is RCO plus RCS. So one is from distance from oxygen to carbon, another is from carbon to sulfur. So these RCO and RCS are the bond length of the molecule. Now, what I will do from here is substituting the equation third. Equation third means the value of R naught and RS in equation number 1. So the equation number 1 is here is MORO plus MC. The equation number 1 is like this: MORO plus MCRC is equal to MSRS. So now I will substitute the value of RO and RS in this equation. So the equation will become MO, RO की जगह पे मैं लिखता हूँ RCO plus RC plus MCRC ऐसे ही लिखता हूँ, और MS and RS की जगह में ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, then they will become MS RCS minus RC. So I have an equation. By simplifying this equation, it will become MORCO plus MORC plus MCRC is equal to MSRCS minus MSRC. So this is the equation. This is the, I can say, the simplified equation. Now, what I will do is now collecting the RC terms. मैं क्या करता हूँ, RC terms वाले जितने भी terms है उसको मैं एक साइड ले जाता हूँ, बाकियों को मैं दूसरे साइड रखता हूँ. तो RC वाला टर्म एक ये है और ये है, इन तीनों को मैं एक जगह लाता हूं. तो दिस विल बिकम, आई कैन से MO RC प्लस MC RC, इसको इधर लाता हूं MS RC. सो ये मेरे पास 3 टर्म आ गया, और इस साइड रहेंगे मेरे पास MS RCS माइनस MO RCO. ठीक है, तो ये मेरे पास एक टर्म रह गया. नाउ यहाँ पे अगर मैं देखूं इस इक्वेशन में, तो मैं ये RC यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ. सो इफ आई विल टेक RC इज कॉमन, आई विल रिमेन हियर इज MO MC and
ms। तो मेरे पास ये 3 ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और दिस विल बी योर ms rcs minus mo rco। फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस rc मेरे, अब मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, that here is mo plus mc plus ms, that is mass of oxygen, mass of carbon and mass of sulfur। इन सबको मैं कैपिटल m से रिप्लेस करता हूँ and capital is m is the total mass of the molecule and this m is total mass of the molecule that is कौन सी मॉलिक्यूल OCS, दिस इज कार्बन ऑक्सीसल्फाइड का टोटल मास में m से रिप्रेजेंट करता हूं। सो दिस इक्वेशन विल बिकम RCm is equal to ms RCS minus mo RCO। if I take the value of RC, the equation will become, ये मेरे पास एक इक्वेशन आएंगे, अगर मैं RC का वैल्यू निकालूं then this will become ms RCS minus MO RCO divided by M divided by M। सो मेरे पास एक इक्वेशन आ गया जहां पे मैंने क्या कर दिया, RC का वैल्यू निकाला, that is the distance from the center of mass to the center of the carbon atom। RC is what? Distance from the center of mass to the center of mass to the center of your carbon atom। Now after this, now I got the value of RC. What I will do is now substituting equation number 3 in equation number 2. Equation number 2 is our equation of our this moment of inertia. Moment of inertia is what? Moment of inertia is this one. I is equal to m naught r naught square mcrc and msrs। and what is equation third is this, ro is equal to rco plus rc square। so now I will write equation 2 here first। so equation 2 is I is equal to moro square plus mcrc square plus I have msrs square। and now what I will do is I will substitute the value of RO and the second is our RS from equation 3 to this equation। then this equation will become MO, RO की जगह हम ये substitute कर सकते हैं RCO plus RC whole square, ये हमने equation 3 में लिखा हुआ है। then we have MC RC square plus ms rs की जगह मैं लिख सकता हूं rcs माइनस rc होल स्क्वायर। सो ये मेरे पास आ गया ये एक इक्वेशन। नाउ आई कैन ओपन दिस ब्रैकेट इज a प्लस b होल स्क्वायर, इसको मैं a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको मैं a माइनस b होल स्क्वायर, इसके फॉर्मूले के थ्रू मैं इसको ओपन कर सकता हूं। देन व्हाट आई विल गेट इज दिस mo को मैं लिखता हूं A is RCO square, so there is MO। मैं क्या किया, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, साथ में MO के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। then it will become MO RCO square plus second is MO that is B square, then is RC square plus 2AB। 2 is of the formula M, वो ऐसे ही आएंगे, AB means RCO plus RC। ये मेरा ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व हो गई। देन आई हैव दिस टर्म दैट इज MC RC स्क्वायर प्लस, अगेन मैं इसको ओपन करता हूं, MS ऑलरेडी मेरे पास है, MS A स्क्वायर मींस RC स्क्वायर RCS स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मींस MS मेरा ऐसे ही रहेंगे। व्हाट इज दिस RC स्क्वायर, देन इट इज A स्क्वायर B स्क्वायर minus 2AB। now minus 2A means RC MS RCS RC। सो ये मेरे पास और एक टर्म आ गया, ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूं, RC स्क्वायर वाले टर्म्स को एक जगह लाता हूं, कलेक्टिंग द RC स्क्वायर टर्म्स एक जगह में लाता हूं।
then I will get an equation. सबसे पहले मेरा RC स्क्वायर ये वाला है, MORC स्क्वायर प्लस ये वाला है, one is this, second is this, MCRC स्क्वायर यही है, प्लस मेरे पास यहाँ पे एक RC स्क्वायर है, that is MSRC स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया। बाकी जो भी होगा मैं इनको ऐसे ही लिखता हूँ। मेरे पास और क्या है यहाँ पे, दिस इज, और इसमें मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, दिस इज योर MORCO, यहाँ पे प्लस नहीं है, दिस इज योर RCO ये होगा, ठीक है, MORCO, और इसमें भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ 2RC को। सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज 2RC, मैं इन दोनों के बीच में कॉमन निकाल रहा हूँ, दिस इज एंड दिस। तो 2RC अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ, मेरे पास यहाँ ब्रैकेट में बचेंगे MORCO माइनस यहाँ से RCO2 मैंने निकाल लिया, MSRCS, ये एक जगह मैंने ला दिया, और मेरे पास बचा कौन कौन से टर्म, एक मेरे पास ये बचा, दूसरा मेरे पास ये बचा। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, MORCO स्क्वायर प्लस MSRCS स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं RC स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, RC स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, मेरे पास बचा MO MC प्लस MS, ठीक है, ये मेरे पास बच गया। बाकी जो भी होगा ट्वाइस RC, इसको ऐसे लिखता हूँ, RCO माइनस MSRCS प्लस MORCO स्क्वायर प्लस MSRCS स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, MO plus MC plus MS, mass of all the atoms, I will replace it by a capital N, that is mass of the total molecule. That now this will become RC square M, mass सबको मैंने M से replace कर दिया, प्लस twice RC, मेरे पास ऐसे ही है, MORCO minus MSRCS plus MORCO square plus MSRCS square, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। Now what I will do is, now substitute the value of RC from equation 4 into equation 5, इसको मैं equation 5 कंसिडर करता हूँ। अब इक्वेशन 4 मेरे पास है यहाँ पे ये वाला, अब मैं इस इक्वेशन से RC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, जो मैंने अभी इक्वेशन मैंने निकाला है, RC is equal to MCRCS minus MORCO divided by M। सो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, देन व्हाट आई विल गेट इज, मैंने क्या किया, I मेरे पास है, RC की जगह में यही वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, तो दिस इज M, RC की जगह में सब्स्टिट्यूट करूंगा MSRCS माइनस MORCO डिवाइडेड बाय N होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस RC की जगह में फिर से ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज MSRCS माइनस MORCO डिवाइडेड बाय N, ठीक है, और आगे मेरे पास ये जो बचा हुआ है मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, MORCO माइनस MSRCS प्लस मेरे पास जो ये बचा हुआ है मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, MORCO स्क्वायर प्लस MSRCS स्क्वायर। तो यहाँ तक मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, जहां पे आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ और यहाँ पे रीअरेंजमेंट करूंगा, ताकि हम एक प्रॉपर वे पे हम पहुंच सके। तो इसमें मैं क्या करूं, करता हूं कि दिस आई विल रीअरेंज दिस दिस एस, जैसे कि हमारे पास MSRCS माइनस MORCO, इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन में लिखूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा MORCO, ठीक है, माइनस
I have MsRCS divided by m whole square, ठीक है, माइनस मैं अब इसको रिवर्स करूंगा तो मैं एक माइनस बिल्कुल बाहर निकालूंगा और इसको मैं लिखूंगा 2s MORCO minus MSRCS divided by m into MORCO minus MSRCS plus MORCO plus MSRCS स्क्वायर। यहाँ पे दोनों पे क्या है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस MORCO minus MSRCS divided by m minus 2, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों सेम है, इसको भी मैं MORCO minus MSRCS divided by m whole square plus MORCO square plus MSRCS whole square, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। नाउ मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर था, अब क्या करता हूँ मैं ये ऊपर वाले स्क्वायर को रखता हूँ, नीचे m स्क्वायर और एक m को मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 1 MORCO माइनस MSRCS, यहाँ पे 2 MORCO दिस, ये मेरे पास रहेंगे। तो मैं इसको रीअरेंज करके कैसे लिखता हूँ, मैं इसको आगे ले आऊंगा, MORCO स्क्वायर प्लस MSRCS स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस, मेरे पास बचा यहाँ पे MORCO minus MSRCS divided by m। तो मेरे पास एक इक्वेशन बचा where I have this I is equal to, that is moment of inertia is equal to MORCO square plus MSRCS square minus MORCO minus MSRCS whole square divided by m. So this is the moment of inertia for a linear polyatomic molecule, and this is the equation for the moment of inertia of a linear polyatomic molecule। तो ये क्या है, मेरे पास moment of inertia है for a linear polyatomic molecule where this I depends on the mass of oxygen. This time that is the I can say that is the bond length of your carbon, that is carbon and oxygen. Similarly, mass of sulfur, bond length of carbon and sulfur minus mass of oxygen, then the bond length of carbon and oxygen minus mass of sulfur and bond length of carbon and sulfur whole square divided by total mass, that this m is the total mass of the molecule, total mass of the molecule, that is carbon oxysulfate. So this is the equation for a linear polyatomic molecule, ठीक है। तो ये हमने एक इक्वेशन डिराइव किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो ये था ऑल अबाउट आवर लिनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमेट्रिक टॉप और एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।